शॉर्ट स्टोरी में, जो कि ऑथर की बायोग्राफी रिफ्लेक्ट होती है, एंड हर ऑथर की बायोग्राफी उनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होती है. ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड. First element is the personal experience. So Gordimer grew up in South Africa during apartheid and witnessed its injustices firsthand. सबसे पहले तो ये पैदा होते साथ ही she experienced injustices. ठीक है. Then her writing often explores themes of race, power and identity, drawing upon her own observations and experience. तो इसकी जो राइटिंग में जितनी भी वर्क्स हैं, उसकी राइटिंग की थीम्स, मेजर थीम्स जो हैं, दैट टॉक्स अबाउट रेस, power and identity. The next we have is the historical context. So the story accurately portrays the realities of life under apartheid. apartheid मूवमेंट में किस तरह की लोगों की लाइफ की रियलिटीज़ थी, ठीक है, वो इस स्टोरी में एक्यूरेटली पोर्ट्रे किए हैं, including the segregated funeral practices, the constant surveillance of black communities and the fear of white authority. अच्छा, अब इनके जो है दफनाने के या फ्यूनरल प्रैक्टिसेस हैं, वो सेग्रीगेटेड थे, वो डिफरेंट थे, उनको डिफरेंट रखा गया था. द कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ ब्लैक कम्युनिटी, सर्वेलेंस मतलब टू कीप एन आई ऑन समबडी, या अपनी नज़रों में उनको रखना, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, और जैसे कि सर्वेलेंस कैमरास होते हैं, ये सीसीटीवी कैमरास, जो कि दे रिकॉर्ड एवरीथिंग, सो दैट वी पीपल हैव द बैकअप ऑफ वट एवर इंसिडेंट हैपन, सो वी कैन फाइंड द कल्प्रिट. लेकिन इधर बात अलग है, द कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑफ ब्लैक कम्युनिटीज़. वाइट कम्युनिटी जो है वो ब्लैक कम्युनिटी पे नज़र रखती थी, सो टू grab or do not give them their due rights. हर चीज़ में उनको they put these black community people behind the bars. And then the fear of white authority. तो जब एक white authority ऊपर आएगी and he or whatever the community, it would be very dominant over the black community. जैसे कि है ना, एक फेमिनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है कि पेट्रार्की इज़ ऑलवेज इन द सेंटर एंड विमेन आर ऑलवेज इन द पेरिफरी. तो इस तरह वाइट जो है ये बाइनरी ऑपोजिशन है, ब्लैक एंड वाइट. तो वाइट इज़ ऑलवेज इन द सेंटर एंड ब्लैक इज़ ऑलवेज इन ऑन द पेरिफरी. देन सोशल कमेंट्री. Gordimer was a vocal critic of apartheid and used her writing to challenge the racist system and raise awareness of its impact on individual and society. A Watcher of the Dead serves as a powerful commentary on the human cost of apartheid and the need for social justice. सोशल कमेंट्री हमारे पास ये है कि गॉर्डमू जो है वो शी वॉज वेरी वोकल अबाउट अपार्थाइड मूवमेंट, या कोई भी इनजस्टिस हो रहे हैं सोसाइटी में, सिस्टम में, वो उसके ऊपर अवेयरनेस रेस करती थी कि इस चीज़ के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं इंडिविजुअल्स पे या सोसाइटी पे, किस तरह ये एक पर्टिकुलर चीज़ कितना अफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को. जिस तरह की ये शॉर्ट स्टोरी है अ वॉचर ऑफ द डेड, तो ये एक पावरफुल कमेंट्री है ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अपार्थाइड एंड द नीड फॉर सोशल जस्टिस. हर इंसान को उनके पास सोशल जस्टिस होनी चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू लिव होना चाहिए, द वेरी बेसिक राइट टू लिव. तो talking about social commentary, even this whole short story is not available on Google and no video is made on YouTube as well. So this is one of the stance you can take. So additional points add किए हैं मैंने कि आप लोगों के लिए आसानी हो, and you people should read it yourself. And I'll move towards the next characters. पास जो major characters हैं इस short story में, so those are Clara, one is Miriam, one is Clara's parents, and the last one is the mourners. So Clara जो है ये white teenager होती है, grappling with her identity and confronting racial boundaries. The next we have is the Miriam. ये एक young black woman grieving the loss of her brother.
तो नेक्स्ट वी हैव इज़ दी क्लारा's पेरेंट्स। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वाइट स्टैब्लिशमेंट को कि किस तरह वाइट कम्युनिटी में इनग्रेंड है एक चीज़ इनके अंदर मौजूद है, रेशियल एटीट्यूड, हाउ दे थिंक ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी लेस ऑफ देम। एंड देन वी हैव द मोर्नर्स, मतलब ऐसे लोग जो मातम करते हैं क्योंकि मीरियम का भाई भी मर जाता है। तो ये मोर्नर्स जो है ये सिंबलाइज करते हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अंडर अपार्थाइड। सो थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी मोर्नर जो है सिंबलाइज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अपार्थाइड या अपार्थाइड मूवमेंट को, द कलेक्टिव एक्सपीरियंस, कलेक्टिवली जो लोगों का स्टांस है ओवर अपार्थाइड, ये वो एक्सप्रेस करते हैं। Coming towards the plot of this short story, so the story revolves around a white South African teenager named Clara living in a racially segregated society during the apartheid era. अब ये एक वाइट साउथ अफ्रीकन टीनेजर के ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है क्लारा, और वो पैदा होते साथ ही ये एग्ज़ामिन करती है कि किस तरह हमारी कम्युनिटी में रेशियली सेग्रीगेशन है और किस तरह ये अपार्थाइड एरा शुरू हुआ है। सो शी डेवलप्स अ peculiar fascination with attending black funerals, drawn by a morbid curiosity and a desire to understand the life and death of people from different worlds. अब ये क्लारा जो है ये डिफरेंट फ्यूनरल्स पे पहले दूर दूर से देखती थी, उसके बाद ये जो है करीब करीब से लोगों के फ्यूनरल्स देखती थी, एंड शी वाज वेरी क्यूरियस, इसके अंदर बहुत क्यूरोसिटी थी कि आई शुड अंडरस्टैंड दी लाइफ एंड डेथ्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वी शुड, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर इसमें फ्यूनरल की भी सेग्रीगेशन था। तो क्लारा क्योंकि वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और मीरियम जो है ब्लैक कम्युनिटी से, इनके फ्यूनरल के सिस्टम्स में सेग्रीगेशन था और मतलब सेपरेट सेपरेट थे, एलिमेंट्स सेपरेट थे। सो क्लारा बहुत ज़्यादा शी वाज ड्रॉन टूवर्ड्स दिस थिंग, और ये लोगों के इस तरह ग्रेव्स को विजिट करना शुरू कर दिया इसने, एंड शी ऑब्जर्व्स फ्रॉम अफार remaining detached and silent. However, she gradually confronts her own prejudice and forms a fragile connection with a young black woman named Miriam. तो ये फिर जब फ्यूनरल्स पे जाती थी तो एक दिन ये एक ब्लैक वुमेन से मिली मेरियम, और ये उसके थोड़े क्लोज हो गई, और इट वाज जस्ट अ फ्रेजाइल कनेक्शन, एक बहुत हल्का सा कनेक्शन था, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इस मेरियम का भाई मर जाता है। And as the story progresses, Clara's involvement deepens and she navigates the complex racial and social